Here we have to integrate cos raised to 4 2x. Previous sum it's a sin raised to 4x. Now here it's a cos raised to 4 2x is there. So now first step same converting this 4 power as a 2 power. This can be written as integration of cos square 2x raised to 2 dx. Done. So cos square x is there. So we can apply our identity. We are having identity cos 2 theta. Cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1. So here this cos square 2 theta can be written as cos square theta. So it's a 1 plus cos 2 theta by 2. So here 2 theta is there. So it's a 1 plus cos 4x. 1 plus 4 by 2 and whole square dx is there. Now expansion 1 by 2 square 4. So 1 by 4 constant taking outside this integration and performing expansion of this 1 plus cos 4x whole square. So it's a first term square plus second term square plus 2 into first into second term of dx. Again we are having cos square 4x. Cos square 2x is 1 plus cos 4x. So cos square 4x is 1 plus cos 8x. So this is equal to 1 by 4 integration of 1 plus this will be 1 plus cos 8x whole divided by 2 plus 2 cos 4x dx. Done. Now combining these two terms. So it's a 2 ones are 2 plus 1 3. 3 plus cos 8x by 2. Again separating these terms. So that will be equal to 1 by 4. 2 ones are 2 plus 1 3. 3 plus cos 8x divided by 2. So it's a 3 by 2 plus cos 8x by 2 plus 2 cos 4x dx. Now we can integrate this function. So this will be 3 by 2 constant. So it's a 3 by 8. 3 by 8 integration of 1 dx plus 4 2s are 8 constant integration cos 8x dx plus 1 upon 4 2 by 4. So it's a 1 by 2 integration cos 4x dx. Now we know the integration of 1 cos 8x and cos 4x. So integrate it. So it's a 3 by 8. Integration of 1 with respect to x is x plus 1 upon 8 integration of cos 8x. Cos का होगा sin. It's a sin 8x divided by differentiation of this 8x which is 8 plus 1 by 2 integration of cos 4x is sin 4x. Sin 4x divided by differentiation of this 4x which is 4 plus c. So final answer is 3 by 8x plus 8 8 is 64. So it's a sin 8x by 64 plus 4 2 is 8 sin 4x plus c is the answer. Clear students? Next question number 12. So here in 12 sum we have to integrate sin square x upon 1 plus cos x dx. So here I can see this sin square x as a 1 minus cos square x, and again further I can see 1 minus cos square is nothing but the 1 plus cos x 1 minus cos x. So simplification is 1 minus cos square x. First identity sin square x plus cos square x equal to 1. So we can write sin square x equal to 1 minus cos square x. And this is 1 plus cos x dx. Now again factorization of this 1 minus cos square x is 1 minus cos x. 1 minus cos x 1 plus cos x whole divided by 1 plus cos x dx. So this 1 plus cos x will be cut. So I am having this 1 minus cos x dx. So I can simply integrate this one. So 1 dx minus cos x dx. So integration of 1
x minus integration of this cos x sin x plus c is the answer. X minus sin x plus c is the answer. Clear? Now question number 13. Saving this space. So here I equal to cos 2x minus cos 2a is there, divided by cos x minus cos a dx is there. Now check this question. Here in numerator we are having cos with 2x, multiple of x, and cos 2a, and here it's a. So first you have to convert this multiple into sub multiples. So cos 2x can be written as, what is cos 2 theta? Cos 2 theta, it's a 2 cos square theta minus 1. Cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. So cos 2x will be 2 cos square x minus 7, and cos 2a will be 2 cos square a minus 1. So applying this identity over here. So your first step is 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square a minus 1 divided by cos x minus cos a, integration with respect to x dx. Open this bracket. So it's a 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square a plus 1. So minus 1 plus 1 will be cancelled out. So we are having 2 cos square x minus cos square a, and taking this 2 common. So that will be constant. So I equal to 2 constant, and this one cos square x minus cos square a divided by cos x minus cos a, integration with respect to x, that is our dx. Now again identity, cos square x minus cos square a, cos x minus cos a, cos x plus cos a. So this is equal to 2. This one is cos x minus cos a, cos x plus cos a divided by cos x minus cos a dx. So this term is cancelled, cos x minus cos a, cos x minus cos a. So we are having 2 integration of only this term, cos x plus cos a, integration with respect to dx. So this can be written as 2 integration cos x dx plus 2 cos a is also constant, integration of 1 with respect to x. So now again integration of cos x, it's a sin x plus 2 cos a constant, integration of 1 is x plus c. So this can be written as 2 sin x plus 2x, or we can write 2 cos a x or cos a 2x plus c. Clear? This is your answer. Next, question number 14. So here I will given I. I is cos x minus sin x, cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x dx. And again देखो, sub multiples are there. So first you have to convert this 2x into x. So here sin x, cos x, and sin 2x is there. So first you have to convert this sin 2x into x. And whenever this term 1 plus sin 2x is there, you have to remember the simplification of this 1 plus sin 2x. We can write this 1 as a sin square x plus cos square x. So let's see the magic. Cos x minus sin x. And now I'm writing this 1 as a sin square x plus cos square x. That is our identity. Sin square x plus cos square x plus, and this sin 2x as a 2 sin x cos x, and integration with respect to x dx. Now what is this? First term square plus 2 into first into second term square, second term plus second term square. So this is perfect square trinomial, and that is equal to cos x minus sin x, and this one is sin x plus cos x whole square dx. Clear?
Now check this denominator. The differentiation of this denominator, cos x minus sin x, is the numerator. So now we are using the method of substitution, in which we are taking this denominator equal to t. So let denominator, or denominator is sin x plus cos x. So let sin x plus cos x equal to t. Differentiate on both sides with respect to x. So we are getting cos x minus sin x, differentiation with respect to x dx equal to dt. So this is our numerator. So now we can write our I as a cos x minus sin x dx is our dt upon sin x plus cos x is our t, and t square is there. So t square. So this is equal to t raised to minus 2 dt. So its integration is t raised to minus 1 upon minus 1 plus c, and that is equal to minus 1 upon t, minus 1 upon t plus c, and that is equal to minus 1 upon t. T is sin x plus cos x. Sin x plus cos x plus c is the answer. Minus 1 upon sin x plus cos x plus c. This is your answer. Next, 15 number. Here we are given integration I equal to tan cube 2x sec 2x dx. So for this sum, first I have to divide this power. I am dividing this tan cube power as a tan square into tan 2x. So this is equal to tan cube x is nothing but the tan square 2x into tan 2x, and this sec 2x dx. Done. Now what is this sec square 2x? Tan square theta is nothing but the sec square theta minus 1. So it will be sec square 2x minus 1 into tan 2x sec 2x dx. Now using the method of substitution, here we are taking sec 2 theta as a t. So sec x tan x, we are getting this one as a dt. So let sec 2x equal to t. So what is the differentiation? Differentiation on both sides with respect to x. So sec x is sec x tan x. So differentiation of sec x. So it's a 2x. So it's a sec 2x tan 2x. Again differentiation of 2x is 2 with respect to x dx, and that is equal to dt. So we can replace this tan 2x sec 2x dx as a dt by 2, and this one is a t square minus 1 by 2. So now our integration I is 1 upon 2 t square minus 1 with respect to t dt. So integration is 1 upon 2, this will be t square dt minus 1 dt, and that is equal to 1 by 2 t cube by 2 t cube by 3 minus t plus c. Done. So it's a 1 by 6. Our answer is 3 2s are 6. T cube by 6. Our t is sec 2x. So it's a sec raised to 3. Sec cube 2x by 6 minus t. T is, है ना, 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2. So t is sec 2x by 2 plus c. डन. सिंप्लीफाई करके आंसर लिखा ये लास्ट वाला ऊपर, t की जगह पर sec 2x रखा. 16. 16 is again similar to question number 10 and 11. 10, it's a sin raised to 4, 11 number cos raised to 4, and our 16 is 10 raised to 4. So integration I equal to 10 raised to 4 x dx. So now
This one is tan square x dx. Replacing this tan square x as a sec square x. So tan square x है ना, सेम मेथड से जाएगा. So tan square x is nothing but the sec square x minus 1 dx. So this is equal to tan square x sec square x dx minus tan square x dx. Now here this tan square is also replaced with sec square x minus 1. So this one is tan square x sec square x dx minus tan square is nothing but this sec square x minus 1 dx. So this can be easily integrate as a tan x minus x, but here for the integration of this one we have to consider this term as a I1, which is integration of tan square x sec square x dx. For the integration of this term we have to take this tan x as a t, take tan x equal to t. So what we are getting after the differentiation on both sides, we are getting sec square x dx equal to dt. So this one is dt and this one is t. So our I1 is t square, this one is t square and this one is dt. Integration of t square dt is nothing but the t cube by 3 plus c. And what is our t cube? T is 10x. So it's a 10 cube x by 3 plus c. This is our integration I1. Integration of this one is this one, and integration of this is x square x minus x is 10x minus x, and minus sign is there, so minus 10x plus x. So adding minus 10x plus x with this, so we are getting our answer I as a 10 cube x by 3 minus 10x plus x plus c. This is our answer. Clear? Question number 17. कुशल, कुशल नहीं. वेरी गुड. आ रहा है ना समझ में? आंसर देते रहना. हाँ ओके चलो. हर्षिता, ऋषिराज, आर्यन, सिरजा, तनिषा, सेजल. ओके वेरी गुड चलो. इंटीग्रेशन आई इक्वल टू sin cube x plus cos cube x divided by sin square x cos square x dx. Now I am writing this denominator separately with this numerator, है ना. ऐसे होता है कभी भी. a प्लस बी डिवाइड बाई सी, इसको हम ऐसे लिखेंगे a बाई सी प्लस b बाई सी, है ना. एलसीएम लेके इसको कंबाइन करते हैं, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर के साथ इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर. सो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू sin cube x अपॉन sin square x cos square x plus cos cube x upon sin square x cos square x dx. Done. So simplify it. So you are getting I equal to sin cube x upon sin square x. So one sin x will be there. So sin x upon cos square x सेपरेट करना है. चलो कर देते हैं. dx प्लस यहाँ पर cos x अपॉन sin square x dx, है ना. एक साथ दोनों किया, सिंप्लीफाई किया और दोनों इंटीग्रेशन को सेपरेट किया. नाउ चेक दिस टर्म. I can write this term as a sin x upon cos x. So it's a tan x. One cos x is there. So it's a sec x. So this is tan x sec x. Or we can say sec x tan x. This is familiar term. And this one cos x upon sin x. So it's a cot x upon sin x, which is cosec x. So this is nothing but the cosec x cot x dx. बोलो किसको इंटीग्रेशन आता है इसका? माइक अनम्यूट करो, आंसर दो. What is the integration of this sec x tan x? किसका डिफरेंशिएशन है? वेरी गुड, sec x.
पहली बार ये फॉर्मूला है। और ये cosec x माइनस cosec x। वेरी गुड, चलो है ना, पहली बार ये फॉर्मूला आया, ये याद रखना है। तो दैट इज sec x माइनस cosec x प्लस c। 18 नंबर, I इक्वल टू cos 2x प्लस 2 sin square x डिवाइड बाय cos square x dx। This is a x, this is x, but this is 2x. So first converting this multiple into sub multiples. So cos 2x को लिखेंगे 1 minus 2 sin square x, है ना। cos 2x के एक तीन फॉर्मूला होते हैं, 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x and cos square x minus sin square x. So here we are writing 1 minus 2 sin square x, cos 2x as a 1 minus 2 sin square x. So integration I equal to 1 minus 2 sin square x, that is equal to cos 2x plus 2 sin square x divided by cos square x dx. So here 2 sin square x minus plus cut. It's a 1 upon cos square x. 1 upon cos square x is sec square x. Sec square x dx. 10x. Differentiation of 10x is sec square x. So integration of sec square x is 10x. So it's a 10x plus c is the answer. 19 number. So here question number 19, we are given that integration I equal to 1 upon 1 upon cos x, sorry, 1 upon sin x, 1 upon sin x, cos cube x dx is there. So here modification is required. Which type of modification? Because we can't do any integration or differentiation or any substitution method over here, है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेंथी होगा। तो एक मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो, साइन एक्स और साइन क्यूब एक्स है, इवन पावर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। इवन पावर में कन्वर्ट होगा ना, तो हमारे आइडेंटिटीज यूज कर पाएंगे हम। तो देखो कैसे होगा। सो here cos cube x is there. So I am dividing one sin x with cos cube x and adding one power over here. So this will be 10x and cos raised to 4x will be there. Done. So it's a 1 upon, this is sin x divided by cos x, and this will be cos raised to 4x dx. Done. And this cos raised to 4x is nothing but the sec raised to 4x. So it's a sec raised to 4x divided by, this is 10x dx. So this sec raised to 4 can be divided into two parts, है ना। हमने देखो 10 raised to 4 किया, sin raised to 4 किया, cos raised to 4 किया। अभी ये sec raised to 4 बाकी था, लेकिन उसको अलग तरीके से दिया था, है ना। इसका सिंपली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के लिए 10x थोड़ा मिसिंग था, तो उसको साथ में ऐड कर दिया। तो वही वाला सम है ये। सो दिस sec raised to 4 इज नथिंग बट दी, दो पार्ट में डिवाइड करें इसको, sec square x इंटू sec square x डिवाइड बाई 10x dx. So even power is there, so here we can apply our identity. So keeping one sec square x as it is and replacing 1 as a 1 plus 10 square x. So this 1 plus 10 square is equal to sec square x. So it one is 1 plus 10 square x, and this one is as it is sec square x upon 10x dx. Done. Now taking this 10x as a substitution, take 10x equal to t. So if you are taking 10x equal to t, वी आर गेटिंग डिफरेंशिएशन एज है ना। ये 10 डिनोमीटर में क्यों दिया था, क्योंकि ये सेक्स स्क्वायर डी एक्स को कंबाइन करने के लिए। सो इट विल बी सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आपका डी टी आ गया, ये आपका 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, हो गया इजी। तो इट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 10 एक्स इज देयर, so it's a divided by t dt. Again writing this t separately in denominator of this 1 plus t square, so it's a 1 upon t, 1 upon t dt plus t square by t, so it's a t dt.
So integration of 1 upon t is nothing but the log mod t plus integration of t is t square by 2 plus c. Replace this t with 10x. So we are getting log mod or answer I equal to log mod t log mod 10x log mod 10x plus t square by 2. So it's a 10 square x by 2 plus c. दिस इज योर आंसर, है ना। इसको आप टिक मार्क करके रखो, इम्पोर्टेंट है ना। बोर्ड की एग्जाम में जब आप जाओ तो उसके अगले दिन ये सब आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है ना, अदरवाइज ये याद नहीं आएगा कि इसको साइन को डिवाइड करना था। क्वेश्चन नंबर 20, here we given I equal to cos 2x divided by cos x plus sin x होल स्क्वायर dx। मैंने आपको बोला था cos 2x के तीन फॉर्मूला है, कौन से? cos 2x is nothing but the cos square x minus 1। दूसरा 1 माइनस, अच्छा 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x। थर्ड फॉर्मूला होता है cos square x minus sin square x, है ना। थ्री फॉर्मूलाज आर देयर फॉर cos 2x। नाउ अपनी जरूरियात के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। अपने खुद के मन के राजा है हम। तो इससे cos 2x, सो cos 2x इज नथिंग बट दी cos square x minus sin square x। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, सॉरी फैक्टराइजेशन करेंगे ना, cos square x minus sin square x, वी आर गेटिंग cos x minus sin x, cos x plus sin x। cos x plus sin x is already given, so one term will be cut out, है ना। जैसे आपको नरेंद्र मोदी की तरह दूरदर्शी होना है कि भविष्य में क्या होगा, वो आपको थोड़ा सोचना है यहाँ पर। तो it's a cos 2x, it's a cos square x minus sin square x divided by cos x plus sin x whole square dx। डन। cos 2x इक्वल टू ये थर्ड फॉर्मूला यूज किया, है ना। कुछ तो ऐसे रट्टा लगाते हैं ना, तो 2 cos square x minus 1 करके यहाँ पर बैठ जाते हैं, सर कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं होगा। सो cos x minus sin x, cos x plus sin x, cos x minus sin x, cos x plus sin x upon cos x plus sin x whole square dx। So cos x plus sin x, one term will be cut, so integration I equal to cos x minus sin x upon cos x plus sin x dx। Done। Now check this denominator, cos x plus sin x का डिफरेंशिएशन करो तो न्यूमरेटर मिलेगा। So here we can take substitution as a cos x plus sin x equal to t, differentiate on both sides with respect to x। So here we are getting minus sin x plus cos x, that is cos x minus sin x, cos x minus sin x dx equal to dt। So we can write our I as a 1 upon t dt, which is nothing but the log mod t plus c। So our integration I equal to log mod t, t is cos x plus sin x, cos x plus sin x plus c। This is our integration I। Clear? 21 नंबर, ये एमसीक्यू भी नहीं आएगा कभी। सो I इक्वल टू साइन इनवर्स cos x dx, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया पहली बार, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन याद है हमें कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू इट्स रेंज, है ना। यहाँ पर तो cos x है, यहाँ पर कुछ कंडीशन नहीं दिए, तो रेंज के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। लेकिन साइन इनवर्स साइन x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर cos x है। सो I इक्वल टू साइन इनवर्स, cos को साइन में कन्वर्ट करना है, तो cos को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि साइन को π/2 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जाके ये cos होगा। सो साइन इनवर्स साइन, so here now we can apply the definition of inverse trigonometric function, that is equal to π/2 minus x dx। Done। So now separating these two terms,
So this is equal to pi by 2 constant integration of 1 with respect to x minus x dx. So pi by 2, 1 integration of 1 is x. So we are getting pi x by 2 minus this one is x square by 2 plus c. This is our answer. 22 22 को नेक्स्ट पेज पर करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको 19 को टिक करा है ना, 19 मैंने आपको बोला कि 19 आपको एग्जाम के पहले एक बार जरूर देख लेना है। तो उसी हिसाब से ये 20 नंबर, ये 22 नंबर है, वो आपको एग्जाम के पहले एक बार है ना प्रैक्टिस भी कर लेनी है ना। इतना इंपॉर्टेंट सम है। सपोज ये एक्सरसाइज में मुझे कोई सम रखना है एग्जाम में, तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, डायरेक्ट 22 रख दूंगा। तो टिक मार्क कर दो और इसको आपको प्रैक्टिस करना है एग्जाम के अगले दिन। सो नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, it is given that 1 upon cos x minus a cos x minus b dx, है ना। तो देखो इसको कैसे हमें इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है। यहाँ पर तो डायरेक्ट पहले इंटीग्रेशन इसका हो ही नहीं पाएगा, तो इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा। सो व्हाट इज अवर मेकअप, तो इसको आपको याद रखना है। देखो मैं ऊपर है ना एक फॉर्म लाऊंगा, कैसे, आई एम डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग दिस टर्म एज ए साइन a minus b, so it's a sin a minus b upon, it will be cos x minus a cos x minus b dx। ऐसा क्यों किया, देखो ये साइन a माइनस बी को मैं अभी फिर से मॉडिफाई करता हूँ। इट्स द 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन, राइटिंग दिस साइन a माइनस बी एज ए साइन x माइनस बी, ये वाला एंगल साइन x माइनस बी माइनस x माइनस है, ये वाला एंगल। इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो इट्स x माइनस बी माइनस एक्स, एक्स एक्स विल बी कट, प्लस है तो इट्स a माइनस बी, तो a माइनस बी अपॉन दिस वन इज cos x minus a cos x minus b dx। डन। अभी हमारे पास फॉर्मूला है साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ऐसे होता है, साइन a माइनस बी, so it's a sin a cos b minus cos a sin b। So instead of a and b, we are having x minus b and x minus a. So writing that formula, that is equal to 1 upon sin a minus b integration of sin x minus b minus x minus a. This is our a and this is our b. So this is sin x minus b cos x minus a minus cos x minus b sin, है ना, sin x minus a whole divided by or denominator cos x minus a cos x minus b and integration with respect to x dx. Now again writing this denominator separately with this numerator. So we are having 1 upon sin a minus b, है ना। ये देखो टू टर्म्स आर देयर इन न्यूमरेटर, फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म, दोनों टर्म के नीचे सेपरेटली लिखना है। तो इट्स इंटीग्रेशन ऑफ sin x minus b cos x minus a divided by cos x minus a cos x minus b minus cos x minus b sin x minus a divided by this one is cos x minus a cos x minus b dx, है ना। सेपरेटली लिखा, अभी देखो इक्वल टर्म कट हो जाएंगी, cos x minus a cos x minus b will be cut, और यहाँ पर क्या होगा, cos x minus b cos x minus b will be cut। So we are having 1 upon sin
a minus b. This one is integration of 10 है ना, 10x minus b, 10x minus b माइनस, और यहाँ पर होगा 10x minus a माइनस 10, ये माइनस है, माइनस 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 10x minus a, और ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट, और ये dx। सेपरेट करो या फिर डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख दो तो आंसर, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a minus b इंटीग्रेशन ऑफ 10 x minus b dx। याद कर लो 10 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 10, so this is equal to 1 upon sin a minus b integration of 10x, it's a log mod sec x minus b minus log mod sec x minus a plus c। So this is equal to 1 upon sin a minus b log, these two logs are in subtraction, so it's sec x minus b upon sec x minus a plus c, and again we can convert this sec into cos, so our final answer is 1 upon sin a minus b log cos x minus a upon cos x minus b plus c, so this is your answer. Clear students? So this is the most important sum of this exercise.